with SAP MM enterprise structure. Okay, so SAP MM enterprise structure में guys, enterprise structure in the sense what? First thing, ये होता है which defines enterprise in SAP ERP system. Okay, structure. For example, a XYZ group of companies है, that is our client, ठीक है, और उनको SAP implement करना है, ठीक है. Now enterprise structure हमें पहले सिस्टम में क्रिएट करना पड़ता है for that organization. Now first thing, client मतलब क्या? XYZ group of companies is our client. Client in the sense, guys, it has its own set of master data with independent table sets. And according to hierarchy, a client occupies the highest level in an SAP system. Client it has its own sets of master data with independent table sets. मतलब क्या कि जो भी डेटा हम एसएपी में मेंटेन करते हैं गाइस, वो सेव होता है टेबल्स में, ठीक है. एंड क्लाइंट को इंडिपेंडेंट टेबल्स होते हैं क्लाइंट रिलेटेड. दिस क्लाइंट रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं वो सेव होता है उस पर्टिकुलर टेबल्स में. So client, it has its own set of master data with independent table sets. According to hierarchy, a client occupies the highest level in SAP system. ठीक है, ये highest level होता है. For example, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, यू नो दैट टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नंबर ऑफ कंपनीज है, राइट. टाटा फाइनेंस है, टाटा मोटर्स है, उसके बाद ये टीसीएस है ना. सो दीज आर द कंपनीज एंड टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर ये कंपनीज आती है. लेट्स टेक एग्जांपल, ये नोमेनक्लेचर हम लेते हैं XYZ group of companies TTMM. Under that, TTMM is a company code. Okay, TTMM is the company code. Now this TTMM engineering work private limited, ये हमारा कंपनी कोड है. दिस नोमेनक्लेचर यू कैन टेक एनीथिंग, यू कैन टेक अल्फाबेट ले सकते हो, आप न्यूमेरिकल ले सकते हो, नॉट एन बिग डील, ठीक है. अब इस केस में इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. मैं डेफिनेशन बताता हूं इसकी. इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ओके, with it's having a own independent accounting department. It's having its own profit and loss statement and the balance statement. Within a client, that company code is an independent accounting unit. It is legal entity that has its own profit and loss statement. It has own balance statement. Okay, so you know that कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, तो उसका टीसीएस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग रहता है, टाटा फाइनेंस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग रहता है, उसके बाद आपका जो टाटा मोटर्स है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस एंड नो the profit and loss statement, finance related statements are different. तो इस केस में कंपनी कोड मतलब क्या होता है? इट इज हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट इसके अलग रहते हैं. दैट इज अ कंपनी कोड. नाउ क्लाइंट एंड कंपनी कोड कम्स अंडर फीको. ओके, दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी. ये जो काम है क्लाइंट एंड कंपनी कोड, ये है फीको का काम है. ओके, और हमारा जो काम है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्लांट से एमएम का रोल आता है यहाँ पे. जैसे मैंने ये दो ऑप्शन मेंटेन किया है, फीको, क्लाइंट एंड कंपनी कोड. फीको करता है एंड एमएम, दैट इज फॉर व्हाट, प्लांट से स्टार्ट होता है. नाउ ये प्लांट क्रिएशन हमें करना पड़ता है एज ए एसएपी एमएम कंसल्टेंट. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लांट मतलब क्या कि जहां पे भी जो भी आपका बिजनेस हो, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स ऑफिस हो, मेंटेनेंस हो, आपके बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी जहां चलती है, दैट इज योर प्लांट. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो वो पर्टिकुलर वर्कशॉप आपका प्लांट आएगा. नाउ प्लांट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विद इन अ कंपनी वेयर एक्टिविटीज टेक प्लेस. अ प्लांट विल प्रोड्यूस अ गुड्स एंड मेक अ गुड्स अवेलेबल फॉर द कंपनी. ओके, इट इज हैविंग, we can say, your plant can be, और भी सिंपल आपको अगर बताना हो, plant can be any location. We can say it is unit having a manufacturing facility हो, या warehouse distribution center हो, sales office हो, आपका maintenance plant हो, anything. जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपका बिजनेस हो, उसकी एक्टिविटी जहां पे चलती है, that is your plant. Now plant comes under logistic. First thing, ठीक है, it is subdivided into the
into, we can say it is subdivided an enterprise in different aspects, we can say. उसके बाद प्लांट के अंडर आता है स्टोरेज लोकेशन. स्टोरेज लोकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट which actually differentiates between a different material stock in a plant. Or simple, it is a location. Storage location is a place where stock is kept physically. Simple and short. Okay, जहां पे आपका स्टॉक मेंटेन होता है, that is your storage location. So now that TTMM having two plants, TTM1 plant number 2, TTM2 plant number 2. ठीक है. नाउ प्लांट नंबर 1 हैविंग टू स्टोरेज लोकेशन. रॉ मटेरियल के लिए SL80 है एंड फिनिश प्रोडक्ट के लिए SL81 है. सेम TTM2 दैट इज अ प्लांट नंबर 2, SL30 दैट इज फॉर रॉ मटेरियल, और आपका जो SL31 है दैट इज फॉर फिनिश प्रोडक्ट. सो TTMM हैविंग टू प्लांट्स. इन नोमेनक्लेचर मैंने जैसे बोला, आप कुछ भी ले सकते हो, आप अल्फाबेट ले लो, आप न्यूमेरिकल ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक. Now TTMM having two plants, TTM1 and the TTM2. Okay. Now TTM1 having two storage location, SL80 and SL81, and TTM2 having two storage location, SL30 and SL31. Okay. Now after storage location, next is purchasing organization. Now purchasing organization means what, guys? In every organization there is a purchasing department, right? And that purchasing department is mapped as a purchasing organization in SAP system. ठीक है. वो SAP जो purchasing department होता है, वो SAP में purchasing organization मैप होता है. Now what is meant by purchase organization? A purchasing organization is an organizational unit under a company or a plant that is responsible for the procurement activities according to requirements. It is responsible for the external procurements. वेंडर के पास से हम मटेरियल परचेस करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट. ठीक है. द परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द procurement activities for that organization. Purchasing procurement activities, that is a purchasing organization. Then purchasing group. Now you know that purchasing organization मतलब purchasing department जो होता है उसमें कौन होता है? बायर्स होते हैं, purchasing executives होते हैं, purchasing manager होते हैं. These are the hierarchies, right? Now purchasing group जो है that comes under purchasing organization first of all, and it is a buyer. Purchasing group जो भी आपके डिपार्टमेंट में बायर, परचेसिंग एग्जीक्यूटिव, देन प्रोक्यूरमेंट स्पेशलिस्ट जो भी काम करते हैं वो मैप्ड होते हैं परचेसिंग ग्रुप इन SAP ERP सिस्टम. ठीक है. नाउ परचेसिंग ग्रुप इन द सेंस व्हाट? It is a buyer or group of buyer which is responsible for the day-to-day procurement activity for that particular purchasing organization. That comes under purchasing organization. Clear? So that is all about enterprise structure. Now, first thing, we have to create this enterprise structure in the system. That is our first step. ये enterprise structure हमें system में create करना पड़ता है individually. Individually in the sense what? TTMM कंपनी कोड क्रिएट करेंगे, फिर हम प्लांट क्रिएट करेंगे, फिर हम स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करेंगे, फिर परचेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फिर परचेसिंग ग्रुप. आफ्टर दैट सिस्टम डोंट नो दैट योर TTMM दैट प्लांट, दैट टू प्लांट्स जो भी TTMM1 TTM2 जो है वो इसके अंडर आते हैं. किसके? कंपनी कोड के आते हैं. दिस बिलोंग्स टू कंपनी कोड. सिस्टम को पता नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें असाइन करना होता है. ये जो स्टोरेज लोकेशन है वो एक दूसरे से असाइन करना पड़ता है. ठीक है. सो दैट इज अ SAP MM enterprise structure. Okay, so how to create SAP enterprise structure? First we have to create a company code. Okay, how to create company code I'll tell you now. Just type SPRO here. Okay, where? Here, see, in this box. This is a transaction code box. Okay, in last class I have explained everything. SPRO, enter. Then SAP reference IMG. Full form of IMG, it is an implementation guide.
as we discussed in first class. Now, enterprise structure, definition, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंपनी कोड. ठीक है, हमें कंपनी कोड क्रिएट करना है. तो कंपनी कोड ऐसे जैसे मैंने बोला, ये कम्स अंडर फीको. ठीक है ना, वो फीको के अंडर आता है. तो इसलिए अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने सिलेक्ट किया. एंड देन एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड. ओके, यू कैन मेक अ रनिंग नोट्स गाइस. ठीक है, आप रनिंग नोट्स निकाल सकते हो. लाइक कि ये पाथ जो है वो अगर आपको मतलब एंटर करना हो, लाइक रनिंग नोट्स निकालनी है तो निकाल सकते हैं. लाइक एसपीआरओ, देन एसएपी रेफरेंस आईएमजी, देन एरो, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, अगेन फिर एरो, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर एरो. ऐसे आप रनिंग नोट्स यू कैन टेक. ओके, सो वो इजी रहेगा आपको प्रैक्टिस करते समय, वो आपको आसानी रहेगी. ठीक है, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड. ओके, देन एडिट कंपनी कोड डेटा, क्लिक ऑन न्यू एंट्री. उसके बाद वी नीड टू डू टीटीएमएम कंपनी कोड. और कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम में हम. ठीक है, टीटीएमएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, देन सिटी आएगा. यू कैन टेक एनी सिटी, कंट्री, लेट्स टेक. देन करेंसी, वट एवर इट मे बी, जो भी है. एंड देन लैंग्वेज में इंग्लिश लेता हूँ. ठीक है, तो कंपनी कोड, कंपनी नेम, सिटी, ये सब जनरल डिटेल्स हमें मेंटेन करनी है. एंड देन हमें सेव करना है. सेव करने के बाद सिस्टम और एक स्क्रीन हमें देगा, दैट इज एड्रेस. ठीक है, नाउ डिटेल एड्रेस, जो भी कंपनी है आपका, कंपनी कोड का डिटेल एड्रेस हमें यहाँ पे देना है. ठीक है, नाउ दैट इज अ कंपनी, सो लेट्स मेंटेन कंपनी. अगेन टीटीएमएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज आवर कंपनी. Okay, then search term में you can maintain anything. Okay, let's maintain TTMM. Then street address. Okay, street address in the sense, let's take then house number you can maintain here. Then postal code you can maintain. City, the detail address we can say. Country and the region also you can maintain over here. Regions are there. Okay, now the PO box address, communication details, telephone, mobile phone, email, communication details आप यहाँ पे maintain कर सकते हो. And after that, just click on enter. Now here, that is a prompt for customizing request. जो भी आप configuration करते हो, SAP system उसको एक कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट नंबर देता है. ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट नंबर हमें मेंटेन करना है यहाँ पे. डू वन थिंग, जस्ट क्लिक ऑन दैट क्रिएट रिक्वेस्ट एंड एंटर योर कंपनी कोड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दैट इज एमएम, टीटीएमएम. ओके, दैट ओनली वन टाइम सेटिंग है, वन टाइम आपको करनी पड़ती है. आफ्टर दैट नो नीड. ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव. सी, सिस्टम क्या देता है, नंबर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट देता है. ओके, आपको जस्ट सेव दिस. ओके, डेटा वाज सेव्ड. ठीक है, नाउ गो बैक. ये हुआ TTMM, TTMM Engineering Private Limited. We have created our company code. Now, second, after company code, what is the next? Plant. Right. Now, next is plant. So let's close this financial accounting. Okay. Enterprise structure, definition, then logistic general. Here, define, copy, delete, check plant. As I told you guys, that plant comes under logistic. Right. So
just click on execute, done. Define a plant because we are going to create a new plant, है ना, हम न्यू प्लांट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या यहाँ पे ये डिफाइन प्लांट करना पड़ेगा. ओके, इट्स हाँ डन. नाउ क्लिक ऑन न्यू एंट्री, है ना, न्यू प्लांट क्रिएट करने जा रहे हैं तो न्यू एंट्री हमें करनी पड़ेगी. क्लिक ऑन न्यू एंट्री, देन TTM1, यहाँ पे आप TTMM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड देन प्लांट नंबर 1, और यू कैन टेक ये आप यहाँ पे डाल सकते हो एंड यहाँ पे प्लांट नंबर 1. ओके, प्लांट नंबर 1, देन यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन में फैक्ट्री कैलेंडर डालना है आपको. फैक्ट्री कैलेंडर इन द सेंस व्हाट, उसमें एक फैक्ट्री कैलेंडर होता है रीजन वाइज. ओके, तो उसमें आपके जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग हॉलीडेज है, जो भी है वो सब डिपेंड, वो सब मेंटेन रहता है. ठीक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड वन. नाउ लेट्स मेंटेन फॉर इंडिया. सो फॉर इंडिया, वेर इज इंडिया. ओके, नीचे होगा. Let's take a Indian factory calendar, that is a INC, this one. Okay. Again, system will ask you detail address. Now, this detail address, we need to maintain a plant address. Sometimes क्या होता है, प्लांट अलग लोकेशन में होते हैं ना, और ऑफिस जो है आपका हेड ऑफिस वो अलग लोकेशन में होता है ना. तो इसलिए सिस्टम अगेन पूछता है कि प्लांट का एड्रेस क्या है आपके, बताओ. ठीक है, प्लांट आपके कंपनी कोड के अंडर ही आता है, बट स्टिल एड्रेस समटाइम्स डिफरेंट होता है ना. तो उस केस में हमें फिर से प्लांट का एड्रेस मेंटेन करना पड़ता है. ओके, यू कैन मेंटेन सेम और यू कैन मेंटेन डिफरेंट वन, नो प्रॉब्लम. ये वन टाइम है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करो सिर्फ, वो वन टाइम ही करना है. ठीक है, सो ये डिटेल इंफॉर्मेशन में देखिए सब एड्रेस अभी आ गया है आपका, ठीक है, लैंग्वेज की एंड ऑल दैट थिंग्स. ठीक है, फैक्ट्री कैलेंडर ये हुआ सेम. सेव दिस, डेटा वाज सेव्ड. नाउ गो बैक एंड क्रिएट अ सेकंड प्लांट, दैट इज अ TTM2. ठीक है, तो अगेन न्यू एंट्री, सेम प्रोसेस फॉलो करना है दूसरे प्लांट क्रिएट करने के लिए भी. TTM2 प्लांट नंबर 2, then here TTMM Engineering Private Limited. Okay, and here in factory calendar, save country you can take. I'm not going to maintain a full address now. ठीक है, TTMM यहाँ पे रीजन डालता हूँ, एंटर. सो डेटा वॉज सेव्ड, और ये सेव करो. ये आपका दोनों प्लांट क्रिएट हुए, TTM1 एंड TTM2. सी यहाँ पे देख लेना, TTM1 प्लांट नंबर 1 and TTM2 plant number 2, that comes under this TTMM Engineering Private Limited. ठीक है, ये मैंने जस्ट मेंटेन किया है नेम. ओके, असाइनमेंट हम बाद में करेंगे, आफ्टर सब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होने के बाद हम असाइन करेंगे. ठीक है, आफ्टर प्लांट नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना. ठीक है, नाउ स्टोरेज लोकेशन कम्स अंडर प्लांट गाइड्स. रिमेंबर हाउ, आई विल शो यू. Okay, so we have created company code in financial accounting. We have created a plan in logistic general. Now we are going to create a storage location. हम storage location में storage location create करेंगे under plant. ठीक है, तो material management,
ये एक्सपांड करना है मटेरियल मैनेजमेंट। उसमें दो ऑप्शन है आपके, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन एंड मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन करेंगे। ठीक है, जस्ट एग्जीक्यूट दिस। अब देखिए क्या पूछ रहा है मुझे, सिस्टम क्या पूछ रहा है अभी, कंपनी को स्टोरेज लोकेशन किसके अंडर आता है गाइस, प्लांट के अंडर आता है। ठीक है, अब देखा, पहले प्लांट डालना पड़ रहा है मुझे, और उस प्लांट के अंडर मुझे स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना है। ठीक है, सो TTM1 के लिए हम पहले ये स्टोरेज लोकेशन मेंटेन करते हैं। ठीक है, सिंपल, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। तो क्या क्या हमने डिसाइड किया है, दैट इज फॉर रॉ मटेरियल एंड SL81, ये हुआ फिनिश्ड मटेरियल के लिए। ठीक है, ओके, एंड ये सेव करना है हमें। ठीक है, दैट्स इट। ये देखो प्लांट TTM1, उसके अंडर स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेव कर दो। क्लियर? नाउ गो बैक अगेन, let's create a plant, let's create a storage location for TTM2. ठीक है, maintain storage location, now TTM2, TTM2, enter, TTM2 see. Okay, now same, new entry, SL30. Okay, so SL30 already existing in the system. Let me take SL31 and 32. SL31 I will take. Okay, maybe है. SL41, 40 I will take. Okay, great. सो रॉ मटेरियल इसके लिए रॉ मटेरियल एंड SL41 के लिए फिनिश वन। ठीक है, ये सेव कर दो। SL40 एंड SL41, दीज आर द स्टोरेज लोकेशन जो कि हमने क्रिएट किए हैं प्लांट TTM2, SL40 and 41, right? Okay, so SL80, SL81, that is for raw material, that is for finished. SL40 for raw, SL41 for finished. Okay, so these are the two storage location we have created. Okay, SL40, SL41. Okay, now here let's go back. Now let's create a purchasing organization. ठीक है, so purchasing organization उसके ही नीचे है पर maintain purchasing organization। ठीक है, तो वो हम लेंगे, execute this। okay, then new entry, simple। now here TTPO, that is a purchasing organization जो कि हमने nomenclature decide किया है, TTPO। here also TTPO। okay, it's already existing in the system, TMPO I will take। okay, ये भी है। अगर existing होना ऑलरेडी तो ऐसे आता है, देखो अभी कैसे आया है ऐसे। ठीक है, so TKPO I will take। ये नहीं है, right, great। so TKPO we will create। okay, so TKPO, यू कैन टेक नंबर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हो कुछ भी। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि एक ही परचेस ऑर्गेनाइज, यू कैन क्रिएट मल्टीपल परचेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जस्ट आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन देंगे हम, PORG, दैट इज अ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परचेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफ TTMM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है नेम के, एंड देन सेव कर दो ये। Then we have created a purchasing organization. Again, go back.
Okay, great. Again, go back. Maintain purchase organization. Close this. We are done with this. Now, what is the next? That is a purchasing group. Okay. तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, आफ्टर दैट क्या परचेसिंग ग्रुप है. नाउ ये जो परचेसिंग ग्रुप है उसका पार्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वगैरह पूरा क्लोज कर दिया है. नाउ ऐसे नीचे अगर आए हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नीचे तो मटेरियल मैनेजमेंट करके है. आर यू एबल टू सी दिस मटेरियल मैनेजमेंट? कंफ्यूज हो जाते हो आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाला मटेरियल मैनेजमेंट और ये मटेरियल मैनेजमेंट में कंफ्यूज हो जाते. डू नॉट कंफ्यूज नाउ. एक्सपांड दिस मटेरियल मैनेजमेंट जो कि ऊपर के स्क्रीन में, जो मेन स्क्रीन में है वो वाला, ठीक है. देन अंडर मटेरियल मैनेजमेंट यू कैन सी द परचेसिंग. जस्ट एक्सपांड दिस. You will get the list. Now here you can see create purchasing group. See, create purchasing group. Are you able to see this create purchasing group? और ये execute करना है हमें. Click on new entry. Let's take TTM is our purchasing group. और मैंने जैसे ही बोला ये बायर होता है या फिर ग्रुप ऑफ बायर, तो उस बायर का टेलीफोन नंबर हो, फैक्स नंबर हो, टेलीफोन हो, ईमेल हो, ये डिटेल्स हम अपडेट करेंगे यहाँ, ठीक है ना. वो एक एंटिटी लाइक वो एक पर्सन है, एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे उस परचेसिंग ग्रुप को. तो उस पर्सन या फिर डिपार्टमेंट वी कैन से इट इज अ बायर और ग्रुप ऑफ बायर वी कैन से. तो उसका जो डिटेल्स है, टेलीफोन नंबर हो, ईमेल्स हो, फैक्स हो, ब्ला ब्ला, वो यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है. सो आई विल टेक अ बायर 1, telephone number you can take, fax number. Again, there's a multiple things are there. See, extension, email is also there. Okay, you can maintain these things and just save it. Then now our enterprise structure have been completed, we can say now. But assignments बाकी है अभी, ठीक है. तो असाइनमेंट इन द सेंस व्हाट गाइस, हमने इंडिविजुअली क्रिएट किया. कंपनी कोड हो, प्लांट हो, परचेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने इंडिविजुअली क्रिएट किया. सिस्टम को पता नहीं है कि इस टीटीएम के अंडर ये 2 प्लांट आते हैं. सिस्टम डोंट नो अबाउट दिस. तो उसके लिए हमें असाइनमेंट्स करनी होती है. ओके, तो ये 3 असाइनमेंट में जो मैंने मेंशन किए हैं नीचे, दैट असाइनमेंट्स वी नीड टू डू. That assign a plan to company code, assign purchase organization to company code. Let's do assign plan to company code. Let's do the assignment. अभी ये जो असाइनमेंट है ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के ही अंडर है, ठीक है. यहाँ पे अगर आपने देखा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एक्सपांड करो, ठीक है. अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एक्सपांड करने के बाद वी हैव टू ऑप्शन, दैट इज डेफिनेशन एंड असाइनमेंट. डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. एंड इन असाइनमेंट हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं. एंड दैट 3 असाइनमेंट्स वी नीड टू डू. ओके, लेट्स डू द असाइनमेंट. फर्स्ट असाइनमेंट, एक्सपांड करो ये असाइनमेंट. प्लांट टू कंपनी कोड. सी, प्लांट टू कंपनी कोड. TTM1 ठीक है. हाँ, TTM TTM1 TTM2, ठीक है. ये हमारा कंपनी कोड हुआ, ये हमारे प्लांट हुए. ये सेव कर दो. Okay, so we are done with the first assignment, that is a plan to company code. Again, go back. Okay, you can see over here. Again, आपको अगर वेरीफाई करना है तो पोजीशन में जाओ, TTM1 एंटर डालो, you will get this. See, TTMM, TTM1, TTMM, TTM2. There's 2 lines you can see. Okay, so this first assignment we are done with it. Then close this. Now more 2 assignments we need to do.
मटेरियल मैनेजमेंट में फर्स्ट असाइनमेंट है असाइन परचेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ये है। तो पोजीशन में जाना है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टीकेपीओ, एंटर करो। टीकेपीओ एक फर्स्ट लाइन में आएगा, देखो गाइस, टीकेपीओ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीटीएमएम इंजीनियरिंग, कंपनी कोड जो है टीटीएमएम डाल दो यहाँ पे एंड एंटर करो। ये स्टेटस अब क्या है, कंपनी कोड डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखो स्टेटस उसका ये चला जाएगा, ठीक है, सी चला गया। TKPO and company code TTMM. That means what we are doing, we are assigning a purchasing organization to company code. Clear? And just save this. So we are done with the second assignment as well. Now third assignment, assign a purchasing organization to plant. Click on new entry, purchase organization आपके TKPO है ना, TKPO और दो प्लांट है, we have a two plants, right? TTM1 and TTM2. ये सेव कर दो, that's it, simple. Okay, so we have to enter, see, purchase organization to plan. So these are the assignments that we need to do. Assign a plan to company code, assign purchase organization to company code, assign purchase organization to plant. Okay, first, second and third. Okay, now close this. Now we can say कि हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, कि हमने पूरे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर उसकी असाइनमेंट भी की, तो अभी हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। अब ये चेक कहाँ करेंगे कि जो भी हमने क्रिएट किया है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है, वो चेक कहाँ पे करेंगे? फॉर दैट देयर इज वन टी कोड गाइज, दैट इज EC01। कौन सा टी कोड? EC01 टी कोड से हम देखेंगे कि हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है कि नहीं। EC01, enter, click on structure, click on navigation, enter. You will get list of company codes. Do कंट्रोल F करना है और आपका जो कंपनी कोड है वो यहाँ पे अपडेट मेंटेन करो। TTMM वो सर्च करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा इसका नंबर ऑफ हेड्स। TTMM, डबल क्लिक ऑन इट, यू विल गेट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट TTMM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसको डबल क्लिक करना है, ठीक है। TTM पे डबल क्लिक करो, आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो अब देखिए TTMM कंपनी कोड, that two plants TTMM, TTM2 comes under this company code. मैं ये expand करता हूं, देखो अब we just did a 3 assignment but still see our enterprise structure, see वाइस वर्सा वो अटैच हो जाता है। देखो गाइस, अभी ये देखो परचेस ऑर्गेनाइजेशन अगर यहां से भी करूंगा तो देखो कितना ही है, सी जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे यू कैन सी we did just 3 assignment, we did still you can see the enterprise structure कितना बड़ा हुआ है हमारा, see that is the enterprise structure, see अरे okay, you can see now TTM1, these are the storage location, these are the plan to company code किया है, plan to purchase organization किया है, these all things comes under the enterprise structure. So now we can say our enterprise structure have been completed.